Hello everyone. RRB technician key answer shifted to December 27. The chloroalkali process procedure with produces with three products. Which three products? The correct answer for this question is chlorine gas, hydrogen gas, and sodium hydroxide. The chloroalkali process produces three products. First one is chlorine gas, hydrogen gas, and sodium hydroxide. क्लोरोअल्कली प्रक्रिया कौन से तीन उत्पाद प्राप्त होती है? क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस आयन और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है. Spinal cord is made up of which type of tissue? Spinal cord is made up of the nervous tissue is the correct answer. स्पाइनल कॉर्ड किस प्रकार के ऊतक से बना होता है? स्पाइनल कॉर्ड तांत्रिक ऊतक नर्वस टिश्यू से बना होता है. Where were the Khelo India Winter Games 2024 held and what their purpose? The Khelo India Winter Games 2024 held in Leh, Ladakh, February 2 to 6, and Gulmarg, Jammu and Kashmir, February 21st to 25. Their purpose was to promote their winter sports and encourage athletes to take skiing and skating. 2024 को खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ आयोजित किया गया है और उनका उद्देश्य क्या था? 2020 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स लेह लद्दाख 2 से 6 फरवरी और गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर 21 से 21 फरवरी में आयोजित किया गया है. इनका उद्देश्य शीतकालीन खेलों का बढ़ावा देना और एथलीट को स्केटिंग का अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था. Who stated that cell arise from the pre-existing cells and whose hypothesis did modify? Rudolf Virchow stated the cells arise from the pre-existing cell. The correct answer for this question is Rudolf Virchow, and he's modified the cell theory hypothesis of the Skilshan-Schauner. कोशियों के पूर्व अस्तित्व में मौजूद कोशियों को उत्पन्न होती है. यहाँ कथन किसने दिया और उन्होंने किन सिद्धांत को संशोधित किया? The correct answer for this question is Rudolf Virchow ने दिया. According to the policy paper based on the NFHS5 data, what percentage of Bihar's population was multidimensionally poor in 2022-2023? Correct answer for this question is 26.59%. What is the SI unit of the universal gravitational constant G and its numerical value? The SI unit of the universal gravitational constant G is Newton meter square per kg square. The numerical value for G is 6.674 into 10 to the power of minus 7 Newton meter square per kg square. सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत G की SI इकाई और इसका संख्यात्मक मान क्या है? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत G की SI इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. SI प्रणाली में G का संख्यात्मक मान है 6.674 into 10 to the power minus 7 Newton meter square per kg square. What is the SI unit of the work? The correct answer for this question is SI unit of work is joule. If the magnification of a mirror is plus 2/3, what type of mirror it is? The correct answer for this question is it is a convex mirror. यदि किसी दर्पण का आवर्धन है तो वहाँ किस प्रकार का दर्पण होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है. What is the relationship between the charge, work time and voltage? The correct answer for this question is W is equal to Q into V, where W is the work done in joules, Q is the charge in coulombs, V is the voltage in volts. To find the voltage, using U formula, V is equal to P into T by Q, where P is the power of in watts, T is the time in second, Q is the charge in coulombs. चार्ज कार्य और समय को वोल्टेज के किस बीच संबंधित है? क्या कहे? The correct answer for this question W is equal to Q into V, where W is कार्य, Q is charge and V is voltage. What is pathylene? Where is the secreted? Where it is secreted? Pathylene is also known as salivary amylase. It is an enzyme secreted by the salivary gland. The correct answer for this question is salivary amylase. It is an enzyme secreted by the salivary glands in the mouth. It helps in the digestion of the starch into maltose. पेटलिन क्या है और यहाँ कहाँ साबित होता है? पेटलिन जिसे लार एमाइलेस, सलावरी एमाइलेस भी कहा जाता है. यह एक एंजाइम है जो मुंह में लाल ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है. यहाँ स्टार्च को माल्टोस में पचने में मदद करता है.
Which is more compressible, solid, liquid, or gas? The correct answer for this question is gas is the most compressible among the solid, liquid, gas. The correct answer is gas. सबसे अधिक संपीड़ित compressible क्या है? ठोस, सरल या गैस? The correct answer for this question is gas. Thank you for watching. These are the RRB technician key answers.